Hello everyone, how are you? Friends, today's session we will learn how to solve assumption type of question in reading comprehension. Okay, so assumption क्या होता है, ठीक है, how to identify the assumption. Okay, so we will learn each and everything related to this keyword. Okay, assumption. So before moving on, we should learn just how many questions are there from assumption. So in earlier video I have discussed all the types of question in reading comprehension, but in today's session I will be focusing on assumption based question. Okay, so you can see here what is the significance of these types of question. So if you see last 5 years, so in 2022 11 questions were there, in 21 9 question, 22 4 question, 23 7 again, 24 11 question, and 2025 means last year 13 question. So now slowly significance of these types of question is being increases year by year. But I'm not saying that next year also in 26 also there will be number of question will increase, but more or less this will be near about 10 to 12 11. So this much question will remain from this type, assumption type. Okay, so just see what is assumption all about. So assumption क्या होता है, जैसे किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले ऑथर के दिमाग में पहले से कुछ चल रहा है जिसको वो सही मान रहा है, ट्रू, और उसको प्रूव करने के लिए कुछ सपोर्टिंग आइडिया, जैसे कोई भी आइडिया, एनी आइडिया, जैसे कोई भी आप बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश दैट बिजनेस, बट हाउ, तो उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं विद सम एग्जांपल, सम केस स्टडी, ठीक है। तो जो फर्स्ट आइडिया, जो मेन आइडिया, द कोर आइडिया दैट ऑथर अज्यूम, okay, something or abstract that author assume, ठीक है, and based on that assumption or that idea author try to build the whole story. Okay, so वो आइडिया पैसेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है, ओके, बिकॉज वो क्या सोच रहा है, वो एक abstract आइडिया होगा, ठीक है, वो हिडन होता है, डायरेक्टली पैसेज में मेंशन नहीं होता है। वो ऑथर जो अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, फॉर एनी एक्टिविटी यू माइट हैव सम assumption now. फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है ना, सो कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आई विल बिकम एन IAS ऑफिसर, और IAS ऑफिसर बनने के बाद क्या क्या करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो वो जो भी आपके पहले दिमाग में, या ज्वाइन करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले समथिंग मस्ट बी गोइंग ऑन इन योर माइंड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसको सही माने, कुछ सपने देखे, तो सपना क्या है, सपना यही है जो हिडन मीनिंग है, वो डायरेक्टली पैसेज में नहीं होगा, ठीक है ना। और उस सपने को साकार करने के लिए आपने क्या किया, यू नाउ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। ओके, सो इफ यू सी दिस, so what is assumption in all about? So assumption is something that author take for granted. Why take for granted? Because whatever author समझता है कि assumption क्या है, एक आइडिया है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, एक प्रीमाइस है जिसको वो सही मानता है, फॉर ग्रांटेड। एक्चुअली वो सही है कि नहीं है, दैट इज सेपरेट थिंग, उसे वो क्या मानता है, सही मानता है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ठीक है। सो assumption is something that the author takes for granted, a belief or idea that not directly stated in the passage but must be true for the author's argument to make sense, ठीक है, क्लियर। So an assumption is an unstated premise, ठीक है, on which author's conclusion depend. Okay, so it lies between the facts and conclusion. So fact or then assumption and then conclusion, ठीक है। तो assumption कहाँ लाई करता है, फैक्ट और conclusion के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये assumption जो है डायरेक्टली पैसेज में मेंशन नहीं होता है, ठीक है, और ऑथर जो है इसको सही मानता है, फॉर ग्रांटेड लेता है, राइट। सो इफ assumption is false, ठीक है, सो वट एवर आर्गुमेंट ऑथर हैज बीन डूइंग इन द स्टेट पैसेज, all the argument collapse with each other, okay, destroy, मतलब will be rendered meaningless। जो भी अगर assumption क्या होगा, false होगा, तो जो भी बातें ऑथर पैसेज में बोला है वो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, क्लियर। सो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द पैसेज, और ये डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली पैसेज में मेंशन नहीं होता है। वी हैव टू डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज कि ऑथर क्या सोच रहा था, ऑथर के दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है ना। ओके, सो हाउ assumption appear in CSET एग्जाम में, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। सो
which of the following is the assumption underlying the argument? Okay, author assume that, author क्या assume कर रहा है, the argument is based on which assumption? Okay, and what assumption can be drawn from the passage? तो मोस्टली आप देखो कि इसी टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, वर्डिंग यही रहती है, लैंग्वेज यही रहता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट? कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी प्रीमाइज है, ठीक है, तो वो फैक्ट हो गया, अजम्पशन हिडन होता है, और देन कंक्लूजन। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, एक्चुअल पोजीशन ऑफ अजम्पशन इन अ आर्गुमेंट इज मिडिल, वो हिडन रहता है, बीच में रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन ऑनलाइन एजुकेशन बिकॉज इट इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। ओके, गवर्नमेंट को ऑनलाइन एजुकेशन में हैवी इन्वेस्ट करना चाहिए, या इन्वेस्ट करना चाहिए, मोर इन्वेस्ट करना चाहिए, अधिक इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये इट इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, बिकॉज ये क्या है, फ्यूचर ऑफ लर्निंग है। सो कंक्लूजन क्या होगा, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, इतनी सारी बातों का मतलब ये, या कंक्लूजन ये हुआ कि गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन ऑनलाइन एजुकेशन। बट व्हाट इज द assumption associated with this argument? Online education is ineffective and accessible to the most learner. Okay, that's why government should, because this is the main thing na, online education is very effective and accessible to most of the learner. Okay, that's why government should invest more in online education because it is the future of लर्निंग। सो देखो ये एजम्पशन है, अगर ये इफ दिस इज फॉल्स तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो सो इफ एजम्पशन इज नॉट ट्रू देन वट एवर आर्गुमेंट ऑथर इज सेइंग दैट गेट डिस्टॉर्टेड, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ओके, सो एजम्पशन ऑथर टेक फॉर ग्रांटेड टू बी ट्रू। ओके, सो this is the assumption and author assume this. Okay, on the basis of this author doing this kind of argument. Okay, so next example देखो, प्राइवेट कार कॉज मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इन सिटी, प्राइवेट कार जो है सिटी में अधिक पोल्यूशन करते हैं, देयरफॉर बैनिंग प्राइवेट कार्स विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अर्बन पोल्यूशन। ठीक है, नाउ कंक्लूजन क्या हो सकता है, बैनिंग प्राइवेट कार विल रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, यहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बट व्हाट शुड बी द assumption? Other sources of pollution, industry, construction, public transport are less significant or meaningless. Means other sources of pollution ये है, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों को ऑथर क्या समझता है कि ये उतना पोल्यूशन, they provide less or negligible pollution. ठीक है, that's why author is saying that private car causes most of the pollution, that's why they should be banned. Okay, अगर यही गलत हो जाता तो फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। ठीक है, now next example, student who read newspaper regularly perform better in competitive examination. Okay, a student who read newspaper regularly perform better in competitive examination, hence newspaper reading should be made compulsory in school. This is the argument of the author. ठीक है, तो what should be conclusion? Newspaper reading should be compulsory. ठीक है, what kind of assumption must be? Newspaper reading directly contribute to the better performance. Newspaper reading is directly contribute to the better exam performance. That's why a student who, that's why he is saying this is there in his mind. Okay, this is not directly mentioned in the passage, right? But these things, this idea, this premise is there in his mind, and that's why he is saying that a student who read newspaper regularly perform better in competitive examination. Okay, hence newspaper reading should be made compulsory in the school. Okay, so now just see the next, what is the difference between assumption and what is difference between assumption and inference? Because assumption is something that is not directly stated, also inference is something that is also not directly stated in the passage. We have to draw. What is inference? Inference is the logical conclusion that we can draw from the passage. Okay, so here assumption required for argument, किसी भी argument के लिए assumption required है, but derived from the fact. Okay, inference is derived from the fact, taken for granted. Okay, logically concluded. Inference is logically concluded from the passage. And what is assumption? Taken for granted. This is directly not mentioned in the passage. Argument fails without it. Whatever argument is being made by the author in the passage, वो fail हो जाएगा if it is false. Okay, so assumption is always considered as true. Okay,
सो आर्गुमेंट सर्वाइव, ओके। अगर इन्फ्रेंस इसके बिना अगर इन्फ्रेंस कोई भी कंक्लूजन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, दे इवन दो आर्गुमेंट सर्वाइव, ओके, बट if assumption is not true, then argument failed without it, okay. So just see common trap in the question, okay. Statement directly mention the passage. Common trap, what is most important thing, that assumption is directly not mentioned in the passage, okay. So statement whatever there in the option is talking about, statement directly mentioned in the passage. जो ऑप्शन स्टेटमेंट, जो ऑप्शन में स्टेटमेंट दिया रहता है, ठीक है, वो डायरेक्टली पैसेज से रहता है, ठीक है। एक्सट्रीम बोर्ड ऑलवेज, ठीक है, दे देता है। जनरल नॉलेज बेस्ड ऑप्शन, ठीक है। मोरल और इमोशनल स्टेटमेंट, इमोशनल अत्याचार करने वाला आपको ल्योर करता है कि या दिस इज द राइट ऑप्शन, या दिस इज द राइट ऑप्शन, बट बेसिकली वो क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। वन लाइन डिफिनेशन में अगर वन लाइन में अगर समझना चाहे तो क्या होगा, एन assumption इज एन अनस्टेटेड आइडिया दैट मस्ट बी ट्रू for the author's argument to be valid, okay, to hold, okay, clear. Now just see this example, very nice example, okay. Climate change, this passage is related to climate change, right? So what is there in the passage, the government new policy mandate a sharp reduction in coal consumption, ठीक है। न्यू गवर्नमेंट जस्ट ब्रॉट अ न्यू पॉलिसी एंड देयर मैंडेट इज अ शार्प रिडक्शन इन कोल कंजप्शन, ठीक है, बाय द ईयर 2030 coupled with significant subsidies for the solar and wind energy project, ठीक है, clear. Critics argue that this will cause immediate energy price hike and negatively impact the industrial production, ठीक है। मतलब सडन अगर कोल कंजप्शन को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, और ये सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाएगा विद सब्सिडी, तो क्या होगा, उससे इमीडिएट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ एनर्जी एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, ओके। हाउएवर फिर भी प्रोपोनेंट बिलीव दैट, व्हाट प्रोपोनेंट बिलीव दैट दिस शिफ्ट इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। ये शिफ्ट जो है नेसेसरी है, why for the long term economic stability and environmental health, okay. Now which of the following is an assumption made by the proponent of the new policy? So if you see renewable energy sources will be cost competitive with the coal by 2030 even without the subsidies, okay. Not talking about, we cannot assume this, okay. The short-term negative impact on industrial production will be negligible. इसमें तो कुछ और कहा जा रहा है, so you cannot select this. Now environmental health is prerequisite for or directly contribute to long-term economic stability. देखो, environmental health is prerequisite for, क्योंकि it directly contribute to the long term economic stability. This is the thing that is going on in his mind before writing this, before stating all the argument, before doing all the argument. So this is the correct. Why option D is not correct? Subsidies for solar and wind energy are sufficient to ensure the rapid or large scale adoption. No, yeah, this cannot be assumptions, okay. So this is the most appropriate assumption, right? Now see next example. So in every question, in this type of question, you have to use the elimination method, okay. So you must remember all the tools and technique. I have already discussed this in another video, okay. Now second, education reform से related ये topic है. So what is, if you see, read this passage. So a recent proposal suggests placing traditional high stake final exam with continuous project based assessment. A recent proposal suggests replacing traditional high stake final exam with continuous project based assessment, okay, ठीक है. The argument is that this method encourages deeper learning, critical thinking, okay, and collaboration, skill essential for the modern workforce, ठीक है. Opponent fear it will lead to great inflation and decrease in academic rigor, ठीक है ना. Now the proposal to replace high stake exam implicitly assume
ठीक है, ऑथर क्यों क्यों वाई ऑथर इज डूइंग दिस आर्गुमेंट, वाई ही इज विलिंग टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेकिंग फाइनल एग्जाम, वाई, ठीक है. So why is your answer, right? So collaboration and critical thinking cannot be effectively measured. Not talking about our distorted argument statement. Teachers are already adequately trained to design. No. Not talking about this. Okay. A decrease in academic rigor is an acceptance not acceptable. They are opponent now. Opponent they are thinking about now. So why opponents are thinking about? Because they are not accepting it. ठीक है ना. So now you are left with only one option. So D will be the right answer. So what is the main reason why in the here also E method encourages deeper learning, okay, critical thinking and collaboration. Okay, so deeper learning and critical thinking are more valuable for the modern workforce than rote memorization. Okay, so why author is thinking so? Because doing this kind of argument, because deeper learning and critical thinking more valuable होता है, for more is more valuable for modern workforce than rote memorization. रट्टाफिकेशन से बेटर है, ठीक है ना. So आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Public, this topic is related to, this passage is related to public transport. Okay, now see what is given, what argument author is doing. Despite the significant investment in expanding the city's metro rail network, okay, traffic congestion on major roads has not substantially decreased. ठीक है, मेट्रो रेल मेट्रो रेल जो है सिग्निफिकेंटली क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया गया. डिस्पाइट ऑफ दिस जो मेजर रोड है उस पे जो ट्रैफिक कंजेशन है उस वो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, डिक्रीज नहीं हुआ. दिस सजेस्ट दैट सिंपली इंक्रीजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी इज नॉट एनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन ग्रिडलॉक. ओके, नाउ which of the following is an underlying assumption of the statement above. ठीक है, अब देखो why author is thinking like this, there is something in his mind that is going on. So वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि भाई मेट्रो नेटवर्क इतना बढ़ाने के बावजूद भी ट्रैफिक कंजेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ, ठीक है. Why? The metro rail network should have been expanded to suburban near area. No, already expanded. Heavy investment, significant investment has been done. So this cannot be your right assumption. ठीक है, अगर ये assumption होगा तो ये statement valid नहीं होगा. Clear है ना? A significant number of people who uses major road for commuting have access to, but are choosing not to use the metro. Okay, इसीलिए तो जिनके पास a significant number of people who uses major road for commuting have access to metro, but they are not using that metro. That's why despite of heavy expansion of metro rail network, the congestion or traffic on the major roads are not going down. Okay, so this is the correct assumption. Okay, so the investment in metro rail network was not cost effective, so very irrelevant out of the context, out of the argument in the passage. The traffic congestion can only be extreme idea, extreme statement, so we must avoid this. Okay, so we are left with only one option, B. So B will be the what? Right answer. Okay, now just see. Economic growth and happiness. This passage is based on economic growth and happiness, right? So data from nation X is the name of any country. So data from nation X shows that while the gross domestic product GDP has tripled over the last 2 decades, average reported level of happiness have remained flat. ठीक है, despite of heavy GDP growth, ठीक है, tripled GDP growth, the level of happiness remains flat. Okay, therefore policymakers should stop prioritizing GDP growth as the primary measure of national success. ठीक है, नेशनल सक्सेस के पीछे क्या कारण है भाई, लोग खुश होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे जीडीपी ट्रिपल हो गई, डिस्पाइट ऑफ दैट पीपल आर नॉट हैप्पी. ओके, ऑथर इज सेइंग दीज आर द स्टेटमेंट आर्गुमेंट ऑफ द ऑथर. ओके, so to validate these argument, what kind of premises must be there? It means author के दिमाग में क्या चल रहा है, why author is saying like this. So just
assumes GDP growth is the sole cause of stagnation. No. ठीक है. The definition of happiness has remained consistent. No. Over the 2 decades. ऐसा थोड़ी ना है. Increased happiness is a more desirable measure of national success than increased GDP. Okay, increased happiness is a more desirable measure of national success. ठीक है. Increased happiness is more desirable measure of national success than increased GDP. ये ज्यादा डिजायरेबल है, मेजरमेंट है. ठीक है. लोग कैसे नेशनल सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं, कर रहे हैं. ऑथर क्या उसके दिमाग में चल रहा है, यही एजम्पशन है. उसके दिमाग में यही अज्यूम कर रहा है कि इंक्रीज्ड हैप्पीनेस इज मोर डिजायरेबल measure of national success than growth in GDP. Okay, so this is the right assumption. Now you can see all citizens of nation X experience the same rate of income. That's why no, not talking about this is the out of context of the passage. Right. So you are left with option C. So C will be the right answer. Okay. Now, now wildlife conservation. Next passage, wildlife conservation. Okay. So to protect endangered tiger population, the local government has proposed expanding the boundaries of the existing reserve. ठीक है. जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट मींस जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी उन्होंने क्या प्रपोज किया कि इसके बाउंड्री को और हम क्या करें, इंक्रीज करें, एरिया इंक्रीज करेंगे. रिजर्व रिक्वायरिंग द रीलोकेशन ऑफ सेवरल नियर बाय विलेजेस. ठीक है, क्लियर है. अब जब एरिया बढ़ाएगा गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट, तो जो लोकल विलेजेस है उनको रिलोकेट करना पड़ेगा. ठीक है. दिस sacrifice is framed as essential for the future survival of species. And who will sacrifice? The people of local villages who will be replaced, relocate, will have to sacrifice, okay, for the survival of the tigers. Okay. तो ऑथर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों एरिया बढ़ाने की बात कर रहा है. ठीक है, क्योंकि एरिया कम है, उसमें वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है ना. नाउ ऑथर other less disruptive method of conservation like anti-poaching. No, this is not talking about the passage now. Okay, the residents of the relocated villages will be adequately compensated for their loss. This cannot be. देखो इसमें ये आर्गुमेंट टू बी द गिवन आर्गुमेंट इन द पैसेज टू बी वैलिड. ओके, ये इसमें से क्या सही होना चाहिए. अगर इसमें से जो अजम्पशन क्या होगा, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, वो इसको होल्ड करेगा. क्लियर है. मतलब इसमें से क्या सही हो कि ये आर्गुमेंट जो है होल्ड करे, वैलिड हो. ठीक है ना. सो the current reserve boundaries are the primary constant on the growth and survival of the tiger population. ठीक है. Tigers only thrive in large uninterrupted forest area. ऐसा तो कुछ नहीं है. Only extreme bird using extreme bird. So option D should be eliminated. Okay. So the current reserve boundaries are the primary constant. ठीक है, on the growth and survival of the tiger. मैंने अभी बोला ना, ऑथर क्यों ऐसा सोच रहा है, क्यों, क्योंकि बाउंड्री छोटा है. ठीक है, एरिया छोटा है और उसमें वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, दैट्स वाई वो एरिया बढ़ना चाहिए. अगर उस एरिया में कोई विलेज आता है तो उसको रिलोकेट करना चाहिए, और जो उस विलेज में लोग रहते हैं उनको सेक्रीफाई करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीसीज मींस टाइगर. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्लियर. नाउ जस्ट सी नेक्स्ट. In our country, this passage is from 2025. Okay, in our country, handlooms are equated with the culture. In our country, handlooms are equated with the culture that ensured a continuity of tradition. Okay, this idea has become part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state to support the sector. Right. But the notion of tradition as a single linear entity is being strongly contested today. Means people are not considering handloom as their traditional part or part of their traditional culture. Okay, the narrative dominant in defining culture and tradition in a particular way are seen to have emerged as the identity
and histories of a large section, ठीक है ना. The discounted and at times forcibly stifled identity are fighting for their rightful place in the history, right? Against this backdrop, now author is changing this argument, right? Against this backdrop, ये सारी डिस्कशन के पीछे क्या है? Against this backdrop, ठीक है, when we promote handloom as a traditional industry, इन सभी के बावजूद भी अगर हम हैंडलूम को ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल कल्चर के रूप में अगर हम प्रमोट करते हैं, देन इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन चूज टू इग्नोर इट, ठीक है ना. नाउ विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड, ठीक है ना. तो क्या अजम्पशन अज्यूम कर सकते हैं इस पैसेज से, ठीक है. इस पैसेज के सब आर्गुमेंट करने से पहले ऑथर क्या सोच रहा होगा, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा. सो देयर इज नो नीड for the state to be involved in any manner in the handloom sector. There is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector. Okay. क्या देखो, क्या इन सभी बातों के वैलिड होने के लिए ये सही होना चाहिए? क्या ये बात सही है? Can we assume there is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector? No, not at all. Okay. Second, handloom products are no longer appealing and attractive. It's not talking about, or we cannot assume from the passage, okay, कि handloom product are not more no longer appealing, अच्छे नहीं है, ठीक है, qualitative नहीं है, attractive नहीं है, ठीक है. So second is also we cannot assume. Okay, clear है. So which one is the right answer? Neither first nor second. So option D will be the right answer. Okay, clear. Now next question, just go through the question. This is also from 2025 paper. Okay, okay, so just read out the passage. Each state in India faces distinctive set of challenges regarding the impact of warming. सभी स्टेट जो है अलग अलग जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अलग अलग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, राइट. बट ऑल्सो ऑफर्स इट्स ओन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर reducing emission depending on its natural resources, and on the basis of their capacity, their capability, okay, their resources, they are trying to cope up with this. Okay, for example, coastal states need to take action. Now in this line author is just trying to explain the things. Okay, for example, coastal states need to take action to protect their shore from the sea level rise. Districts that are drier need to prepare for variable monsoon precipitation. Okay, Himalaya region have their own unique challenges, and selected part of peninsular India and offshore area offer great opportunity for harnessing wind power. Okay, these various aspects need to be considered for developing clear and sustainable goals for future. Okay, now with reference to the passage, which of the following assumption have been made? So what kind of assumption you can draw from the passage, because assumption is something author take for granted and this is something that directly not mentioned in the passage. So just see, read. Green energy production can be linked to integrated with green energy production can be linked to or integrated with the climate change mitigation and adaptation strategy. ठीक है, that's why ना what's that? These various aspects need to be considered for developing clear and sustainable goal for future. ठीक है, तो green energy production can be linked to or integrated with the climate change mitigation and adaptation strategy. So this is the valid, okay, valid assumption. Okay, now just see second, effects of climate change are much more severe in coastal area, coastal and mountainous region, much more severe. Comparison is not being done, किस एरिया में ज्यादा है, किस एरिया में कम है. This we cannot assume from the passage. Okay, so this is our rejected. So only one is true. So option A is the right answer. Okay, and rest are false. Clear? Now let's see the next. If the social inequality is the most acutely felt social problem
in India. If social inequality is the most acutely felt social problems in India, insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem. Most acute economic problem क्या है? Most acute economic problem क्या है? Insecurity. Insecurity is the most acute economic problem. Economic problems. Okay, ठीक है. Economic problem. So economic problem क्या है? Insecurity. Most acute economic problem क्या है? Insecurity. Okay. Clear. Besides those below official poverty line, below official poverty line, even those just above the poverty line are subject to multiple economic insecurity of various kind due to the wealth, health risks, market fluctuation, job related uncertainty. Many government policies are actually intended toward mitigating these insecurity. Okay, many government policies are actually intended toward mitigating these insecurity, right? Now, with reference to the above passage, the following assumption have been made. So now assumption is something that is not directly mentioned in the passage. Okay. So what is these 2 points are there, and we have to just consider which one of them or both or none is the assumption. Okay. So people above poverty line also are prone to suffer from anxiety about the economic insecurity. सही बात है. कह तो रहा है कि not only the people who are not only below official poverty line, the people just above the poverty line all are also subjected to same economic insecurity. So first can be our assumption. Now second, eradicating poverty can result in peace and social eradicating poverty can result in peace and social inequality in the country. So just see here, what is the most acute problem? Economic problem. Insecurity ना, ठीक है, poverty थोड़ी ना है. So this can be outrightly rejected. Okay. So you are left with only one option. So A will be the right answer. ठीक है, only one will be your assumption. Clear? Done? Shall I move on? Okay. So now just see. Just read out this option, okay, and then try to answer the question. Just read out. See, maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect the commercial potential as well as the livelihood dependent on the ecosystem. ठीक है ना? There is also conflict between using an ecosystem only for livelihood, for commercial exploitation, or strictly for conservation. It means there are conflict between these three dimensions: conservation, livelihood, and commercial exploitation. If you conserve the forest, okay, if you promote conservation, then these two will be affected. If you promote commercial exploitation, then conservation will get affected and livelihood also. If you promote livelihood only, then conservation will get affected and simultaneously commercial promotion. Okay, so these three are conflict with each other. Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to deforestation. Just explaining one of the point here. Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to indirect harm like flood, siltation problem, and macroclimatic instability apart from adversely affecting the livelihood dependent on the forest. ठीक है ना? कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं तो उससे ये तीनों तो ये सब तो प्रॉब्लम होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो लाइवलीहुड डिपेंडेंट पर्सन है वो भी अफेक्टेड होंगे. ठीक है ना? दीज कन्फ्लिक्ट्स आर पर्टिकुलरली अक्यूट इन डेवलपिंग कंट्री. और ये सब जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा अक्यूट कहाँ पे है? डेवलपिंग कंट्रीज में, वेयर डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द इकोसिस्टम इज सिग्निफिकेंट. Okay, and commercial exploitation has the potential to boost the national income. Now, which of the with reference to the above passage, the following assumption have been made. So, क्या-क्या assumption बना गया है? There are 2 points.
ठीक है ना. So first one, no country need to depend on ecosystem to boost national income. Now if you see the passage, the statement 1, okay, so this is extreme, okay, this is extreme, okay, this is what, this is extreme, this cannot be true, this is extreme, okay, extreme. So you can outrightly reject this. Now just see second. Resource-rich country need to share their resources with those scant of resources, so to prevent degradation of ecosystem. You cannot assume this. Okay, you cannot assume this because these are nowhere from nowhere. If this is true, then if this is true, then most of the argument will collapse. Okay, so this cannot be your assumption. So neither one nor two, so option D will be the right answer. Okay, clear. Now see the other passage. Again it is from 2025, so just try to read it and try to solve the question. Okay.